Now, dear students, today in this lecture we will study Langevin theory of paramagnetism. Now, first let us briefly discuss what is paramagnetism. What is paramagnetism? A substance is paramagnetic if it has net dipole moment, but due to thermal agitation, dipole moments of individual atoms are randomly distributed throughout the sample, giving a net dipole moment equals to 0. For example, in figure A, net dipoles are oriented in this direction. In this random direction as shown in figure. So these are randomly oriented, means इन्हां दी direction within the sample है जिहड़ी ओह आर्बिट्रेरी है, रैंडम है, इधर उधर नूं है। तो जे आपां सम करिए तो सम करके नैट डाइपोल मूवमेंट अपने को आ जाती है 0। इसका मतलब जे नैट डाइपोल मूवमेंट 0 है तो कोई भी जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है चाहे मैगनेटाइजेशन है सैंपल दे विच इंड्यूस नहीं की होंदी। सैकेंड केस में की करना, इनू मैं एक वीक फील्ड दे विच रख देना, सेम सबसटांस नू वीक फील्ड च रख देना। तो जिहड़ियां डाइपोल्स ने सपोज कर लो जिहड़ा फील्ड है मेरा वो इस डायरैक्शन दे विच है, तो जिहड़ियां डाइपोल्स ने दे विल स्टार्ट अलाइनिंग इन द डायरैक्शन ऑफ फील्ड। वीक फील्ड है इधर, वीक मैग्नैटिक फील्ड, फुल अलाइनमेंट नहीं होगी, हाले भी जिहड़ा थर्मल एजीटेशन है वो रजिस्ट कर रहा है, टैंपरेचर का इफैक्ट हैगा, पर पहला नालों ठीक है, अलाइनमेंट हुई भी है, नॉट प्रॉपर अलाइनमेंट है, थर्मल एजीटेशन हजे भी कंप्लीट अलाइनमेंट तो उन्होंने रजिस्ट कर रहा है। पर जे असी फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दीए, टैंपरेचर घटा दीए, ठंडा करोगे तो जिहड़ा थर्मल एजीटेशन है स्टूडेंट्स वो घट जाती है, टैंपरेचर डाउन कर दिंदे आ, फील्ड बढ़ा दिंदे आ। तो थर्ड केस दे विच साडे कोले की होना है, थर्ड केस दे विच आलमोस्ट फिगर सी है, स्ट्रोंग मैगनैटिक फील्ड दे विच अपने कोले आलमोस्ट जिहड़ी हैगी है अलाइनमेंट है जिहड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आपां कह दिंदे आ जिहड़ा सबसटांस है, सबसटांस इज सेट टू बी मैग्नेटाइज्ड बिकॉज अलाइनमेंट इज कंप्लीट। So this is some basic description about how a paramagnetic substance get magnetized in the presence of magnetic field। ध्यान रखना है मैगनैटिक फील्ड की प्रेजेंस दे विच, जदों तुसीं मैगनैटिक फील्ड नूं हटा दोगे अलाइनमेंट फिर रैंडम हो जानी है, अलाइनमेंट रैंडम होगी तो जिहड़ा सबसटांस की जिहड़ी मैगनेटाइजेशन अक्वायर कीती सी वो खत्म हो जानी है। सो जो पहला दा सबसटांस उस पोजीशन च वो आ जाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सबसटांसिस दे विच जिहड़ी मेन खासियत है मैगनैटिक ससैप्टेबिलिटी है जिहड़ी, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और ये पॉजिटिव भी होंदी है। सो दोनों चीज़ां जिहड़ियां आपां प्रूफ करन जा रहे हैं। हुण आपां थ्योरी स्टार्ट करांगे लैंजेमन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। लैंजेमन ने की सोचा सी, लैंजेमन ने किवें यह थ्योरी एक्सप्लेन की सी, उन्हें की कहा, उन्हें कहना सबसटांस लै लो, टेक द सबसटांस एज ए गैस कंसिस्टिंग ऑफ so many number of dipoles per unit volume, suppose कर लो n number of dipoles per unit volume. Secondly, he made use of
Maxwell-Boltzmann distribution law, which we already study in statistical physics. We will study in statistical physics in next year. Langevin make use of that Boltzmann distribution law to solve the to drive the relation of magnetic susceptibility, that is this relation which is proportional to inversely proportional to temperature. Now we will start Langevin's theory of paramagnetism. Langevin considered a paramagnetic substance as gas consisting of n number of atoms per unit volume. Number of atoms per unit volume, n, each having permanent dipole movement, जब magnetic dipole movement कह सकते हैं, magnetic dipole movement mu m. Now in the presence of magnetic field B magnetic field apply करते हैं, these dipole tends to orient or align in the direction of field, but as I already said, thermal energy resist their complete alignment, and in thermal equilibrium suppose कर लो these dipole align themselves at angle theta with respect to magnetic field at angle theta. So we can make diagram here. If this is the direction of magnetic field, suppose dipole movement is in this direction making an angle theta. So in this direction each dipole possesses potential energy which is called magnetic potential energy and is given by dot B, or we can say it is minus mu m B cos theta. Theta is angle between mu m and this B, mu m and B. Now according to Maxwell-Boltzmann distribution, Maxwell-Boltzmann distribution law, number of dipoles having their particular orient is proportional to exponential minus u over kt. U the value put कर सकते हैं, or we can write exponential UMB cos theta over kt. Because here is negative sign, this negative sign will cancel out with this negative sign, so we get this exponential mu m b cos theta over kt. So probability of magnetic dipole making angle any angle between theta and d theta. Theta and d theta means, let this is d theta. This angle is d theta. If this is d theta,
Let us make cone here now this distance are approximately, we can take this distances are, so radius of this inner circle is r sine theta, and this become, because by arc formula theta is equal to L over r, so this distance become r d theta. It become r d theta. So probability of making a dipole, probability for a magnetic dipole to make angle between theta and theta plus d theta, or we can say that a number of dipoles Dn having their axis within solid angle, this that is made by this hollow cone having semi angles theta and d theta is given by dn is proportional to exponential mu m b cos theta over kt into this solid angle. This is solid angle, or we can say dn is equal to k exponential mu m b cos theta over kt into this solid angle. Now this solid angle is nothing but 2 pi sin theta and d theta. So we can substitute the value. So dn comes out to be 2 pi k exponential mu m b cos theta over kt into sin theta d theta. Again we can take this as a exponential mu m b cos theta over kt into sin theta d theta, where this 2 pi k is a, which is again another constant. So this equation gives, let it be number 2, number of dipoles, that is small number of dipoles which are aligned with respect to magnetic field between angles theta and theta plus d theta, that is which makes which falls in solid angle this much. Now to solve this let us put mu m b over kt as x. So we get dn is equal to a
E x cos theta sin theta d theta. Now total number of atomic dipoles, or you can say molecular dipoles per unit volume can be obtained from this equation by integrating between theta varies from 0 to pi, and this total number is n, which is equal to 0 to pi a e raised to power x cos theta sin theta d theta, and we get this n is equal to a is constant, ex cos theta sin theta and d theta. This is equation number 4, or from where a is equal to n over 0 to pi x cos theta sin theta into d theta. This is number equation 5. Now magnetic movements are oriented in different direction with respect to magnetic field. We will consider only that contribution, or only those contribution which are in the direction of magnetic field. ਜਿਹੜੀਆਂ magnetic movements ਦੀਆਂ dipole movements ਦੀਆਂ directions ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੌਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿਊ ਐਮ ਇਨਟੂ cos ਥੀਟਾ with magnetic field. Therefore the magnetic dipole moment contributed by, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਇੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, जे dn ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, contributed by dn atom is equal to dn mu m cos theta. ਸੋ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ contribution ਆਏਗੀ dn number of dipoles ਦੀ. Also we know that total number of magnetic dipoles per unit volume is capital N. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, average dipole moment per unit volume. What is average dipole moment per unit volume? It is nothing but magnetization, which is called intensity of magnetization. Now total average dipole moment per unit volume, which is also called magnetization, is given by m is equal to 0 to 2 pi dn mu m cos theta, because dn number of dipoles contributes towards magnetic field is this. So we also know that capital N is total number of atoms per unit volume available with us. So ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੋਗੀ 0 to pi dn mu. ਆਪਾਂ dn ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 0 to pi a into mu m, this mu m exponential x cos theta sin theta cos theta, this one and d theta. ਜੇ ਆਪਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ we get m is equal to a 0 to pi mu m e raised to power x cos theta sin theta cos theta d theta. This is equation number 6. Substitute कर देना a दी वैल्यू from this equation.
substitute करते हैं आप, what we get is substituting the value of a from this equation, we get m is equal to n 0 to pi mu m e raised to power cos theta sin theta cos theta d theta are divided by this factor, that is 0 to pi e power x cos theta into sin theta into d theta। लो जी, ये साडे कोले आ गई मैग्नेटाइजेशन। हुण इहनूं सॉल्व कर लिए असीं की करना है, असीं की करना है आ इंटैग्रल ते आ इंटैग्रल सॉल्व करने हैं। नाउ कंसिडर फर्स्ट वन, अपर इंटैग्रल की गल करते हैं आपां। नाउ कंसिडर दिस इंटैग्रल 0 to pi mu m, we can write mu m here also, so no need to write here, x cos theta sin theta cos theta into d theta। यदि वैल्यू जो आप सॉल्व करनी है तो आप की करना है, लेट अस पुट cos theta is equal to y माइनस sin theta d theta is equal to dy। लिमिट्स की गल करते हैं, जदों थीटा हैगा 0 y is equal to 1 बिकॉज cos 0 1 आ गया, जदों थीटा हैगा पाई तो y is equal to माइनस 1। सो जदों ये वैल्यूज़ पुट करांगे आपां इहदे विच तो अपने कोले की आ जाना है, we get this integral, it become 1 to minus 1 when theta is 0, we have y is equal to 1, when theta is pi, y is minus 1, so 1 to 1 minus e xy y dy। Now this negative sign will change this limit, we can write minus 1 to 1 and e raised to power xy into y dy। Okay, now to solve this, at high temperature, when we keep temperature high, it means x, which is mu m b over kt, it become less than 1, so e raised to power x is approximately equal to 1 plus x, expansion of exponential, it is approximately equal to 1 plus x, and when we substitute here minus 1 to 1 plus x into y dy, which is minus 1 to 1 xy plus y square into dy। Now integrating this, you can easily integrate, I will not integrate here, you can integrate, its value comes out to be this 3 over 2 into x. Similarly, when we solve this minus 1 0 to pi exponential x cos theta into sin theta d theta, on similar basis we get value 2. You can solve this yourself, this value, similarly you can put cos theta is equal to y here and changing the limits and integrating, you get this 2 and upper integral you get 2 over 3 into x. Now when we substitute here in this equation, we get magnetization vector, which is given by m is equal to n mu m
into this 2 over 3 x-axis mu m b over kt, and denominator value of this integral is 2. We get 2, cancelling out this 2 we get n mu m square b over kt. This is value of magnetization per unit volume. Also we know that B is equal to mu naught H, so substituting the value here we get n mu naught over kt, 3 kt into H. So this is this equation gives that tells us that magnetization is directly proportional to magnetic field intensity. Also we know that this m is equal to magnetic susceptibility times h. ਇਹਦਾ मतलब magnetic susceptibility ये दोनों इक्वेशन ਨੂੰ कंपेयर करिए ਤਾਂ म्यू नॉट n म्यू m स्क्वायर ओवर 3 kt आ गई, और ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ म्यू m आ वाली जी चीज़ है दिस इज नथिंग बट सी ओवर टी. सी की है क्यूरी कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट. ये पूरा किहड़ा हैगा क्यूरी कांस्टेंट है, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड क्यूरी लॉ. इट इज कॉल्ड क्यूरी लॉ, which is stated that magnetic susceptibility of paramagnetic substance is inversely proportional to its absolute temperature. This is a Curie law, very important law. Also from this question we can easily see that magnetic susceptibility is positive and is temperature dependent. So this proves the concept of paramagnetism of a substance, and this is all about Langevin theory of paramagnetic substance.